hopefully every one of you is having a good Ramadan, and you are trying your level best to reach out for your best in ibadah, and to do good in whatever way you can, with all the purpose in mind, that and all the intention towards that you must get near to Allah. अल्लाह ताला से करीब होने के लिए हर कोई अपनी कोशिशें ज़रूर कर रहा होगा. So today's topic, as I told you, that because this week is for audience, for my audience especially, which have been hearing me since I started my coaching. So it is, you can see the title that it's related to the queens of the houses. So in Arabic it is known as Rabbatul Bayt. So who is Rabbatul Bayt? If anyone already knows the answer, you can put down that in the comment section. So the topic actually जो हमने जो choose किया है, it is going to be Haya, alright, for all the next 3 days. अगले 3 दिन हमने हया के ऊपर ही बात करनी है, but with different aspects. And today, as I told you yesterday, that we are going to start with women first. हम औरत से start करेंगे. So now talking about Rabbatul Bayt, specifically we have chosen Rabbatul Bayt out of it. Why? Number one, it's because that it is men's life partner, right? Basically wife की बात हो रही है. Rabbatul Bayt is your wife, right? And why we chose this? Because it's the very first human relationship on earth. ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप जो पहला रिश्ता है जो कायम हुआ, वो एक मियाँ बीवी का रिश्ता था. सो दैट इट होल्ड्स इम्पोर्टेंस. इट होल्ड्स इम्पोर्टेंस. सबसे ज़्यादा जो अहमियत इस बात की यहाँ से हमें नज़र आती है, जो वैल्यू हमें ये आती है कि कोई भी चीज़ की जो शुरुआत थी करनी चाहिए, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी नीड टू स्टार्ट एनी रिलेशनशिप, इट शुड बी बेस्ड ऑन हलाल एंड हराम. क्योंकि जैसे ही अल्लाह ताला ने औरत को पैदा किया, वैसे ही अल्लाह ताला ने फॉरबिडन चीज़ों की लिस्ट तैयार करना शुरू कर दी, राइट? Because the very first command, the forbidden command that comes is after women is made, a woman is made on in Jannah. So अल्लाह ताला ने बेसिकली, अब इसमें कमतरी की बात नहीं है, लेकिन इसमें मसलहत थी. It was a test. So everything and everyone is a test for each other, and especially the biggest test is such relationships. और हम देखते हैं बेसिकली आज के दौर में, if we see it, खाली आज के दौर में नहीं, ये कब से चला आ रहा है, the biggest attraction towards towards male is female, and for female it's male, right? So अल्लाह ताला ने बेसिकली एक हद लगा दी कि if you really want to if you are really interested, you can actually go forward with a halal relationship, and that halal relationship is marriage, which actually converts you into a husband and a wife. So अल्लाह ताला ने बुनियाद डाल दी पहले रिश्ते की, और बुनियाद वो डाली कि हलाल टर्म्स पे. You can actually go with that, with your nature. आप अपनी नेचर के साथ जा सकते हैं, but choose the right way, the right method. That is what is most important nowadays also. So that's why I chose this topic. So our theme, मैंने आपको बताया, is basically going to move on this. So this is just the introduction, right? This is just the introduction. So talking about Haya, we are going to talk about a modesty of a wife and the obscenity of women today.
आपके सामने ही है कि जिस तरह आप ये औरत मार्च है, राइट, वी हैव औरत मार्च and there are a lot of people who are creating nuisance regarding women rights. We know that being a Muslim woman already gives us a lot of rights. हमें बहुत से rights already मिल जाते हैं, ऐसा है कि नहीं है, but only if we try to follow what Allah has taught us. अब एक बड़ी छोटी सी मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ मॉडेस्टी की. बहुत से लोग मॉडेस्टी को किस तरह ले लेते हैं कि मे बी इट्स इन द ड्रेसिंग ओनली, राइट, इट्स इन द ड्रेसिंग ओनली. ड्रेसिंग मॉडेस्टी का बहुत की हिस्सा है. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो कि यू कांट बी मॉडेस्ट until you are modestly dressed, because your dress is what represents you. जो कुछ आप अगर आप अंदर से मॉडेस्ट हैं, आपके उठने बैठने में वो मॉडेस्टी नज़र आती है, आपके पहनने ओढ़ने में वो मॉडेस्टी नज़र आती है, आपके खाने पीने में वो मॉडेस्टी नज़र आती है. सो औरत को मॉडेस्ट क्यों होना चाहिए? हर मामले में, रिश्ते निभाने में भी मॉडेस्ट होना चाहिए औरत को. So modesty is not just about clothing. Modesty is not just about, eating. It's about relationships also, building relationships, keeping relationships. ये औरत का काम होता है. और इन चीज़ों को सिखाने के लिए ही औरत तरबियत करती है. और उस तरबियत में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? स्पिरिचुअल मॉडलिंग, एज वी डिड अर्लियर. सो स्पिरिचुअल, जब तक वो खुद नमूना नहीं बनेगी औरत अपने घर वालों के लिए, खुद कोशिश नहीं करेगी, तो नॉट इवन हर हस्बैंड इज गोइंग टू फॉलो दैट फुट स्टेप्स एंड नॉट हर चिल्ड्रन. कोई भी फॉलो नहीं करेगा. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. अब एक औरत अगर पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रही, kids will see कि my mom is not respecting the parents. Ultimately, अभी नहीं तो when they will get older, they might do the same with you. And if you really want कि you want that your children should do the same with you, then go ahead. Don't keep these relationships which Allah has told you to be bound with. तो ये जो रिश्ते हैं इनमें भी मॉडेस्टी चलती है. सो यू हैव टू कीप मॉडेस्ट, नॉट टू एक्सट्रीमली क्लोज, नॉट टू एक्सट्रीमली डिस्टेंट, बट इन अ वेरी बैलेंस्ड वे. यू हैव टू कीप देम अलॉन्ग विद यू इन अ वेरी बैलेंस्ड वे. तो ये औरत का काम होता है, ये भी तरबियत का हिस्सा है. और औरत को अपने आप को इसके लिए भी तरबियत देनी चाहिए. बीइंग रब्बतुल बैत, रब्बतुल बैत. Can you see the heaviness of the title in it? If you really want to be the queen of the house, you have to. अब एक क्वीन का क्या काम होता है? एक बड़ा ये आम सा क्वेश्चन है. एक क्वीन का क्या काम होता है? दैट जो अपनी राया है, जो अपने इर्द गिर्द उसकी अवाम है, लोग हैं, उनको संभाल के रखती है. उनको कोई नुकसान पहुंचे तो उसका ख्याल, और ये बिला गर्ज है. उसे उसका कोई फायदा हो ना हो, शी हैज टू डू इट. वाई? अब इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल एक और चीज बताने जा रही हूँ. देयर आर मेनी women who are living their lives in a very modest way. ठीक है ना? They are doing that. But on the other hand, दूसरे लम्हे वो जिता देती हैं कि we have done this, we have done this, we have done this. That shows and that represents that they haven't done it for Allah. ठीक है, ब्रेकडाउन होता है, मेंटल ब्रेकडाउन होता है,
There are situations like that. But if you're doing for Allah, as we, we have been doing this all, that no complaints. If you're doing it for Allah, you shouldn't complain to people. You should even, you should be thankful for the position you are in. Allah ताला ने जो आपको ड्यूटी दी है, you just be thankful और उसी से मांगे. अगर आपको कोई इशू है तो उसी से मांगे, लेकिन उससे भी शिकायत नहीं करें. बी थैंकफुल कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है, that you are in that position, you hold that position. So शुक्र is very important. एक औरत का शुक्रगुजार होना नेमत से कम नहीं है. तो एक शुक्रगुजार औरत बने. ट्राई टू अप्रिशिएट थिंग्स अराउंड योर सेल्फ. जो कुछ आपके पास मौजूद है उसी में खुश रहना सीखें. सो दैट इफ यू विल बी लाइक दिस, इससे फ़ायदा क्या होगा? आपके बच्चों में ये चीज़ डेवलप हो गई. ठीक. एंड आप चाहें ना चाहें, लोग राज़ी हो ना हो, अल्लाह राज़ी होगा आपसे. सो योर द अल्टीमेट पॉइंट इज़ कि आपने अल्लाह को राज़ी करना है. It's not your husband, it's not your children, it's not your, anything. It's not yourself. आपने राज़ी किसको करना है? एक अच्छी औरत की डेफिनेशन, एक मॉडेस्ट औरत कैसे बनते हैं? एक ये सवाल होगा अब आपके जहन में कि हाउ टू बी अ मॉडेस्ट पर्सन, अ मॉडेस्ट वुमन. एक मॉडेस्ट वुमन तब बनती है जब वो ताल्लुक अल्लाह से जोड़ना शुरू कर देती है. You have to strengthen your relationship first with Allah, because उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा कि once you are trying to move on, trying to get closer to him, you will try to be, आप वो बनना चाहेंगे जो आपको अल्लाह बनाना चाहता है. जैसे अल्लाह एक औरत को देखना चाहता है, एक नेक औरत कैसी होती है, आप वैसा बनना चाहेंगे. You will start following the footsteps of Sunnah, of the wives of the Holy Prophet, right? They are the Ummul Mumineen. That's the best perfect examples we have for women. उन्होंने भी घर संभाला है, उन्होंने बिजनेस भी संभाला है, उन्होंने तरबियत भी की है. So the thing is, you should be close to Allah. On the other hand, the problem with our society right now, and the problem with new generation and new mothers or new wives, new women, the upcoming generation, the problem is they actually encourage obscenity. उनको होता है कि जो कुछ होना बस शो हो. It should be shown. They keep their mouths high, their voices high in front of, नहीं देखते बड़ा है छोटा है, हया नहीं है. एक तो ये टोन की बात हो गई. दूसरी, दे डोंट सी के मौका और महल और मुनासिबत से किस तरीके से बात की जाए, कहाँ किस तरीके से, यानी कि अपने आप को ढाला जाए. So these things are being ignored. ये क्यों इग्नोर हो रही हैं? कहने को this society says it's awareness, but I don't think this is awareness. Awareness तो वो है जो आपको अल्लाह ने दे दी, आपका मकाम. अगर आपको अपने मकाम की अवेयरनेस नहीं है, that means you don't want that status. A woman has a really high status in the eyes of Allah. So if you really don't want that status, only then you will not follow what Allah is telling you. अल्लाह तो आपका भला ही चाहता है, एक औरत का भला ही चाहता है. So you have to walk on the footsteps जो आपको अल्लाह ताला ने बताए हैं, to get closer to Allah.
दिस इज मॉडेस्टी. एंड ऑन द अदर हैंड ऑब्ससेनिटी और क्या चीज़ है? किसी का लिहाज ना करना, किसी एडवाइस का लिहाज ना करना, कीप ऑन गोइंग द पाथ जस्ट बिकॉज यू वांट इट, बगैर सोचे बगैर देखे, मुकाबलेबाजी में आके, औरों को फॉलो करके, ट्रेंड सेटर्स को फॉलो करना. ऑल ऑफ दिस मेक्स यू अ पर्सन जो हया के दायरे से बाहर चला जाता है. वाई? बिकॉज you are actually following footsteps other than Allah. All right? उन फुटस्टेप वो कदम आप उठा लेते हैं जो कि अल्लाह ताला ने नहीं बताया होता है, तो वो आपको हया के दायरे से पहले ही बाहर लेके जा चुका होता है. सो इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल वुमेन इन एवरी फील्ड, चाहे वो बिजनेस हो, अल्लाह ताला ने औरत को बिजनेस से या काम करने से रोका नहीं है, लेकिन उसका एक सेट रूल है. लाइक जब वो बाहर निकले तो किस तरीके से निकले. एवरीवन नोज दैट. बाहर निकलने के लिए ही एक कमात अल्लाह ताला ने रखे हैं. ख़ास तौर पे अगर ड्रेसिंग की बात की जाए तो ड्रेसिंग, मॉडेस्ट ड्रेसिंग स्पेशली व्हेन यू गो आउटसाइड, और घर में भी. इट्स नॉट लाइक दैट कि यू शुडंट बी मॉडेस्ट इन योर हाउस, बिकॉज घर में भी आपके अफराद मौजूद हैं, घर में आपके बच्चे मौजूद हैं. If you want to show them, if you want to teach them कि what is modesty and they should be modest, you should be modest first. So the concept again is कि ये क्यों करना है हमने? What's the reason behind this? The only reason is कि आपने अल्लाह को राज़ी करना है. आपने हया के दायरे से क्यों बाहर नहीं निकलना? Because it's Allah's will. Allah wants to see you like this. So you will just follow the footsteps जो अल्लाह ताला ने आपको बताए हैं. So be the रब्बतुल बैत. रब कौन होता है? रब्बतुल बैत. I just told you. Be that रब्बतुल बैत. आपको घर की जो जिम्मेदारी है वो एक औरत के सर पे डाली है अल्लाह ताला ने, ये इन अल्फाज को जब हम सुनते हैं तो, और ये बड़ी हैवी ड्यूटी है that we have to do. So इस पे ज़रा सोचिएगा, ठीक, और कोशिश करें कि हया के दायरे से बाहर नहीं जाएं. इसमें सब कुछ आ जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिकली भी अब बहुत से लोग क्या करते हैं, एक आम से सा ये चीज़ भी हमारे यहाँ आम हो गई है, that just following others just for a trend. Like बाहर निकलते हुए भी, like couples, they don't keep in the circle of haya, they don't stay modest in their relationship. So you have to stay in that circle because Allah has told you to do that. Some things are for private and some things are for public. So if you are a private person, if you want privacy, so stay private. And privacy remains in the house and not outside the house. So these are the little things that we are not actually following right now in these days, which is actually creating a lot of disturbances in the society. Even if the relationships get halal, many young generation, they are actually, they are just having this relationship as a play that, there's charm in it, and they start expecting things, right? वो एक्सपेक्ट करना शुरू कर देती हैं कि दे विल ऑल्सो लिव दैट लाइफ. लेकिन वही बात है, हर घर का माहौल एक जैसा नहीं होता, हर घर आपके हालात एक जैसे नहीं होते. सो दीज थिंग्स कैन ओनली बी फेस्ड इन अ प्रॉपर वे. अगर ये जो डिफरेंसेस हैं इन चीज़ों के, दिस कैन ओनली बी फेस्ड इफ़ यू आर मॉडेस्ट, इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर गुड एंड बैड. सो यू शुड एक्चुअली बी इन द मिडल. इन मामलों में अल्लाह ताला ने बात की है आपसे मॉडेस्टी की, म्याना रवि की. यहाँ दिखावा नहीं चलता, यहाँ म्याना रवि चलती है.
दिखावा सिर्फ कब है? In your privacy. So keep your privacy. So this is the message for all the women who are listening to me today. Inshallah, tomorrow, जैसे आज हमने रब्बतुल बैत की बात की है, we are going to see Haya for the Qawwam, which is man of the house. So let's see that where it goes. So that is it. Allah Hafiz and fi amanillah.